Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Mawaz Islam and I am working as PG in ENT at Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi, and I am mentor for FPCS 1 ENT preparation course, which is a collaboration between MedExam expert and StudyMate. I welcome you all to this free webinar on esophagus. So we'll be starting from embryology, then we'll be looking at anatomy, then we'll go on to see some histology and pathology of esophagus. So starting from embryology of esophagus, esophagus is a part of foregut. We have basically three parts of gut in embryology: foregut, midgut, and hindgut. So esophagus is part of foregut. Foregut is from esophagus to upper part of the duodenum. If we look at the normal anatomy, you can see that trachea and esophagus go side by side. Both have their own pathway, the windpipe and the food pipe. But there are some anatomical abnormalities, some congenital abnormalities, which include pure esophageal atresia, pure tracheoesophageal fistula, or the most common, which is esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula. अगर आप पहली डायग्राम में देखें, you can see that trachea is normal and esophagus is normal. अगर आप second diagram में देखें, you can see trachea is normal, but there is a stenosis or atresia in the upper part of the esophagus. This is known as pure esophageal atresia. अगर आप third diagram में देखें, you can see trachea is normal, but there is a fistula between the trachea and the esophagus. Fourth diagram mein, which is circled in red, you can see that trachea is normal, but there is esophageal atresia of the proximal part, whereas the distal part of the esophagus is joining a trachea and forming a distal tracheoesophageal fistula. So CPSP always tests you on the most common types of anatomy, physiology, and pathology. So you must remember that esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula is the most common congenital abnormality of the esophagus. Then looking at the embryology of the esophagus, after seeing the embryology, we'll go on to see the applied anatomy of the esophagus. So esophagus is a fibromuscular tube which is 25 centimeter in length, and it starts at the lower end of the pharynx and it ends at the stomach. So esophagus का मकसद जो काम होता है, basically pharynx से food को लेकर stomach तक पहुंचाना होता है, और pharynx start होता है at the level of C6 vertebra. और esophagus end होता है at the cardiac end of the stomach at the level of T11 vertebra. So the distance in adult is approximately 25 centimeter. So this is a very important slide which is showing the constrictions of the esophagus. It is important to know the locations during the procedure which we do, the esophagoscopy, because foreign bodies in esophagus can be held up at these constrictions. So we basically have three constrictions in esophagus. First constriction is right at the beginning of the esophagus at the level of C6. Then second constriction is at the level of T4. And third constriction is at the level of T10.
So the first constriction is at approximately 15 centimeter from upper incisors. So whenever we are doing esophagoscopy, we keep on looking at the distance we are from the upper incisors. So basically, the esophagus is a collapsed structure. So whenever we introduce the rigid esophagoscope, we have to monitor the distance from the upper incisors. So the esophagus approximately starts at 15 centimeter from the upper incisors. और esophagus की जो अपनी लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर. So 25 plus 15 centimeter is equal to 40 centimeter. इस स्लाइड में से सीपीएसपी में लाजमी एक या दो एमसीक्यूज आते हैं. So you must remember the first constriction is at the level of C6, which is 15 centimeter from the upper incisors. This is at the pharyngoesophageal junction. Second constriction is at the level of T4, which is approximately 25 centimeter from upper incisors. This is at the level where the arch of aorta is crossing and the left main bronchus is crossing the esophagus. So इन दोनों का एक impression होता है esophagus पे, जहाँ पे slight सी narrowing होती है और उसकी वजह से constriction होती है. Arch of aorta crosses at T4, whereas the left main bronchus बिल्कुल उसके साथ नीचे होता है at the level of T5. And third constriction is at the level of T10, जहाँ पे esophagus diaphragm को cross कर रहा होता है. This is approximately 40 centimeter from the upper incisors. और esophagus enter होता है stomach में at the level of T11. तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास 3 constrictions हैं esophagus में, या इसको हम कह सकते हैं कि 5 constrictions हैं at esophagus. पहली होती है C6 के लेवल पे, जो दूसरी होती है T4 पे होती है और T5 पे होती है, और जो थर्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है T10 पे होती है और T11 पे होती है. This is a mnemonic which can help you remember that C6 plus T4 is equal to T10. और अगर इंसाइजर से इसको मेजर करना शुरू करें तो 15 सेंटीमीटर पे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होती है. Second constriction is at 25 centimeter, and if you add these 15 plus 25, it becomes 40. So if we look at the wall of the esophagus, so wall of the esophagus consists of 4 layers. From within outwards, there are mucosa, submucosa, muscular layer, and the fibrous layer. Mucosa is lined by stratified squamous epithelium, and submucosa is the layer which is connecting the mucosa to the muscular layer. Then muscular layer again has 2 parts, the longitudinal layer and the circular layer. The inner part is the circular and outer is longitudinal layer. The circular fibers at the lower end are thickened to form the cardiac sphincter. And the upper third of esophagus have striated, whereas the lower third have the smooth, and middle third have both the striated and the smooth muscle fibers, which we'll be looking in detail shortly. And the outermost layer, which is the fibrous layer, it forms the loose covering of the esophagus. So quickly revising, the wall of the esophagus consists of 4 layers, which are mucosa, submucosa,
muscular layer containing the inner circular layer and outer longitudinal layer, and the fibrous layer of the esophagus wall. If you look at the muscle in detail, in circle fibers and outer longitudinal fibers, as is already seen, cardiac कार्डिक स्फिंक्टर वो जगह होती है जहाँ पे एसोफेगस जाके स्टमक को ज्वाइन करता है. The lower esophageal sphincter prevents the esophageal reflux. There's another sphincter at the upper end of the esophagus, which is also called the cricopharyngeus. And this is the narrowest point of the esophagus, जहाँ पे majority foreign body और food bolus stuck होता है. So if we divide the esophagus into three parts, upper one third, middle third, and the lower third, you can see that there are striated muscles in the upper third and there are smooth muscles in the lower third, whereas the middle third contains a mixture of smooth and striated muscles. If we see the histology of the esophagus, you only need to remember one line, that mucosa is lined by non-keratinizing stratified squamous epithelium. अगर आप diagram में देखें, you can see squamous cells, which are plate-like cells, and when these squamous cells are stacked on top of one another, we call it as stratified squamous epithelium. और इस diagram में देखें तो you cannot appreciate any keratin layer over the stratified squamous epithelium. So esophagus is basically non-keratinized stratified squamous epithelium. So esophagus is supplied by parasympathetic fibers from the vagus nerve and sympathetic fibers from the sympathetic trunk. The lymphatic drainage of esophagus is divided into three parts: the cervical part, the thoracic part, and the abdominal part. The cervical part of the esophagus is drained by the deep cervical lymph nodes. The thoracic part is drained by the posterior mediastinal lymph nodes, and the abdominal part is drained by gastric or the celiac lymph nodes. Then arterial supply again is divided into three parts: the upper one third, the middle one third, and the lower one third. तो अगर आप देखें, जो upper one third है, it is drained by the inferior thyroid artery. Middle one third is drained by the thoracic aorta. There is it is supplied, the upper one third is supplied by the inferior thyroid artery. The middle one third is supplied by the thoracic aorta. There are esophageal branches from the thoracic part of the aorta, and the lower one third is supplied by the left gastric artery, the esophageal branches of the left gastric artery.
तो इसमें आर्टीरियल सप्लाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपर 1/3 होता है ये नेक में होते हैं, इसको सप्लाई कहते हैं इसोफेजियल ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। मिडल 1/3 जो होता है ये थोरैक्स में होता है, इट इज सप्लाइड बाय द इसोफेजियल ब्रांचेस फ्रॉम द thoracic aorta। और लोअर 1/3 होता है स्टमक के पास होता है, so which is supplied by the esophageal branches of the left gastric artery। तो जिस तरह की आर्टीरियल सप्लाई होती है उसी तरह इसकी वीनस ड्रेनेज है। अपर 1/3 was being supplied by the inferior thyroid artery और upper 1/3 is being drained by the inferior thyroid veins। Lower 1/3 was being supplied by the left gastric artery and lower 1/3 is drained by the left gastric vein। Or similarly, the middle 1/3 is drained by the azygous vein। एक साइड पे हेमीएजाइगस वेन्स होती हैं और एक साइड पे होती हैं एजाइगस वेन्स। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है which is draining the lower 1/3 of the esophagus, it is also called as the coronary vein। तो यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि coronary vein लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन का ही दूसरा नाम है। इसी तरह जो esophagus का लोअर स्फिंक्टर होता है उसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो इधर कोई हार्ट का ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो एनाटॉमिस्ट है उन्होंने इसके नाम ऐसे ही रखे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यू कैन सी देयर इज अ रेड स्टार। दिस रेड स्टार इज शोइंग द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। जो पोर्टल वीनस सिस्टम होता है और जो सिस्टेमिक वीनस सिस्टम होते हैं ये आपस में एनास्टोमोस करते हैं यहाँ पे। तो जब भी इसोफेगस की जो ड्रेनेज का जो वेन्स का जो प्रेशर इंक्रीज होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में, यहाँ पे इसोफेजियल वेरिसेस बनती हैं और जो बाद में ब्लीड करती हैं। तो इस रेड स्टार वाली जगह पे जो पोर्टल सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन या जिसको कोरोनरी वेन भी कहते हैं, और जो सिस्टेमिक पार्ट होता है वो होता है एजाइगस वेन। ये यहाँ पे एनास्टोमोस करते हैं और अगर पोर्टल सिस्टम का हाइपरटेंशन हो तो यहाँ पे इसोफेजियल वेरिसेस बन सकती है। Then we'll be quickly looking at some pathology of the esophagus. So number one disease which we see is the Plumber Vincent syndrome। So this syndrome is a triad of dysphagia, iron deficiency anemia and esophageal webs। जो पेशेंट होगा वो आपके पास प्रेजेंट करेगा विद डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग सॉलिड्स। वो कहेगा कि लिक्विड्स इजीली चले जाते हैं लेकिन सॉलिड्स में उसको डिफिकल्टी होती है स्वॉलोइंग में। जब आप उसकी ब्लड सीपी करवाएंगे तो उसमें आपको एचबी कम मिलेगा, और अगर आप उसके एमसीवी और एमसीएचसी देखेंगे तो वो भी कम होगा, which shows the microcytic hypochromic type of anemia which is seen in iron deficiency anemia। और इन पेशेंट्स का जब आप बेरियम स्वॉलो एक्सरे करवाएंगे जो ओरल कॉन्ट्रास्ट के साथ होगा उसमें आपको इसोफेजियल वेब्स नजर आएंगे। तो जब ये ट्राइड पूरा होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिस्फेजिया और इसोफेजियल वेब्स का, we call it as Plummer-Vinson syndrome। So this is also associated with glossitis, which is the inflammation of the tongue। This Plummer-Vinson syndrome, if not treated in time, it can progress to esophageal squamous cell carcinoma। Esophageal webs तो benign होते हैं लेकिन squamous cell carcinoma malignant हो सकता है। इसका एक mnemonic है Plumber's die, which is taken from the first aid। So Plumbers stand for Plummer-Vinson and die is for the
three parts of the triad. D for dysphagia, I is for iron deficiency anemia, and E is for esophageal webs. The next pathology which we see is the achalasia. So achalasia is a disorder of the lower esophageal sphincter. It is failure of the lower esophageal sphincter to relax. This failure is due to loss of the myenteric, which is also known as the Orbeck plexus, due to loss of the postganglionic inhibitory neurons, which contain nitric oxide and vasomotor inhibitory peptide. So achalasia के जो पेशेंट होगा वो आपके पास प्रेजेंट करेगा with progressive dysphagia to both solids and liquids. वो प्रेजेंट कर सकते हैं कि उनको लिक्विड swallow करने में डिफिकल्टी होती है. इनिशियली उनको सॉलिड swallow करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती जितनी लिक्विड swallow करने में डिफिकल्टी होती है. Whereas किसी ऑब्स्ट्रक्शन में जो एसोफेजियल वेब्स या कार्सिनोमा में उनको पहले सॉलिड swallow करने में डिफिकल्टी हो रही होती है. जब इन पेशेंट्स का बेरियम swallow करवाते हैं तो यू सी अ बर्ड बीक अपीयरेंस. अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो ये बर्ड बीक होती है ऐसे. इसी तरह की एसोफेगस के बेरियम स्वॉलो के ऊपर भी एक पिक्चर आपको नजर आ रही होती है. जब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करता तो यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट होता रहता है और एसोफेगस डायलेट होता जाता है. So barium swallow will show a dilated esophagus with an area of distal stenosis. And this is also associated with increased risk of esophageal cancer. Next pathology which we have is the Parrots Esophagus. So Parrots Esophagus is a specialized intestinal metaplasia. So metaplasia is basically the transformation of one differentiated cell type to another differentiated cell type. Parrots esophagus is seen in the distal part of the esophagus. This is due to chronic gastroesophageal reflux disease. जब बार बार स्टमक का एसिडिक कंटेंट esophagus में आता है तो उसको हम कहते हैं chronic gastroesophageal reflux disease. इसमें नॉर्मली जो एसोफेगस का हमने मिकोजा पढ़ा था, जो लाइनिंग थी वो थी नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. जब बार बार उसको इंसल्ट होती है, बार बार ट्रॉमा होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम. जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होती है, इट इज नॉन सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. तो ये जो नॉन सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, this can later progress into esophageal adenocarcinoma. ठीक है, इसको अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो Barrett's esophagus is a specialized intestinal metaplasia which is in the distal part of the esophagus, or this is due to chronic gastroesophageal reflux disease. बार बार स्टमक से एसिडिक कंटेंट ऊपर आता है, उसमें ये होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है एसोफेगस का, वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स में. और ये जो होता है जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है, दिस कैन लेटर प्रोग्रेस इनटू एडिनोकार्सिनोमा. This is the last slide on the esophageal cancer. Esophageal cancer के patient हो गए will typically present with progressive dysphagia.
पहले उसको डिफिकल्टी होगी swallowing to the solids, उसके बाद उसको डिफिकल्टी होगी swallowing the liquids. जब वो ना सॉलिड ले पाएगा ना लिक्विड्स ले पाएगा तो उसका नेचुरली उसका वेट लॉस शुरू हो जाएगा. Esophageal cancer is usually has a poor prognosis because of advanced disease at presentation. Usually ये stage 3, stage 4 में ही present करते हैं. So we have basically two types of the esophageal cancer. First is the squamous cell carcinoma and second is the adenocarcinoma. जैसे पहले हमने देखा है कि squamous cell carcinoma will involve the upper 2/3 of the esophagus and adenocarcinoma will involve the lower 1/3 of the esophagus. Lower 1/3 में जो disorder हमने पढ़ा था वो था Parrots Esophagus. जब बार बार गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होते हैं तो उसकी वजह से इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होते हैं. स्क्वेमस सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं कॉलमनर सेल्स में और वो फिर बाद में एडिनोकार्सिनोमा फॉर्म कर सकते हैं. क्रॉनिक गर्ड की एक वजह स्मोकिंग भी होती है और ओबेसिटी भी होती है और एक कलेजिया इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर द एडिनोकार्सिनोमा. Whereas the squamous cell carcinoma usually involves the upper 2/3. The risk factors include alcohol, hot liquids and caustic strictures. जो hot liquids होंगे, caustic strictures होंगे, alcohol होगा, ये initially जाके hit करता है upper part of the esophagus में. तो ये upper part of esophagus में ही cancer develop होने के chances ज़्यादा होते हैं. इसमें अगर आप risk factors में देखें तो smoking and achalasia are common in both type of cancers. Smoking and achalasia can cause any type of carcinoma. So we have covered embryology, anatomy, physiology, histology, and pathology of the esophagus. So if you have any comments, any questions regarding this session, please you can type in the chat box or you can type in the comment section of the Facebook. Thank you very much.